Hello everyone and welcome to Creative Age. I'm Jitendra Singh, Aptitude Faculty of Creative Age. और नाटा लास्ट शॉर्ट रिवीजन सेशन चल रहा है। इसमें आज हम पार्ट बी सेशन को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने इससे पहले भी 2 सेशंस कवर किए हैं, और आई होप वो आपको काफ़ी हेल्प किया होगा आपके नाटा एग्जाम में। और बहुत सारे बच्चों का अभी रिमेनिंग अटेम्प्ट्स बचे हैं, बिकॉज आज 11 जून है और लास्ट अटेम्प्ट है जो आपका वो 30 जून तक है। तो जिसका भी अटेम्प्ट अभी 11 या जो लेट लास्ट जून या 30 जून तक है, तो ये सेशन उसके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। या फिर किसी का भी इस फ्राइडे और सैटरडे है तो उसके लिए भी काफी चीजें हेल्पफुल रहेंगी। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हैं या आपने जो भी नाटा मॉक दिया है, या है ना, इसके अलावा आपका नाटा का जो भी स्कोर है उससे रिलेवेंट जो भी डाउट है, या आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट है, तो उसके लिए हमारा जो टोल फ्री नंबर है 6363286363, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं और मेरी टीम आपके जो भी डाउट है उन सभी डाउट्स का क्लियर करेंगे, या उन सभी डाउट्स का आपको आंसर करेंगे। और इसके अलावा भी आपको अगर कोई क्वेरी है, आपको लगता है, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। चैट सेक्शन ओपन है, यहाँ पे भी मैं आपको आंसर करूंगा। और आफ्टर द सेशन अगर कोई लाइव के अलावा कोई रिकॉर्डेड देखता है तो वो भी कमेंट कर सकता है, तो वहां पे भी मैं और मेरी टीम उसके आंसर करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन द प्रॉब्लम फिगर। ओके, सो पहला प्रॉब्लम है आपका सरफेस काउंटिंग का। ओके, सो आप सभी को पता है कि नाटा में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स बन रहे हैं वो किस टॉपिक से बन रहे हैं? क्वांट, वीआर, एनवीआर। इसके अलावा आपका आर्किटेक्चर स्पेशल एप्टीट्यूड। सो सरफेस काउंटिंग किसका एग्जांपल है? आर्किटेक्चर स्पेशल एप्टीट्यूड। So find the total number of surface of the object shown in the problem figure. Okay, so just find out 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Then 13 is left side and 14 right side. So how many surfaces are there? There are 14 surfaces. How many surfaces are there? There are 14 surfaces. Next, 3D problem figure shows the view of an object. Identify the correct elevation as the indicated by the arrow. So which one is the right answer? Do it fast. Okay. So जब आप arrow के direction से देखेंगे, so which one is the right answer? Do it fast, beta. Am I audible to everyone? So chat में है ना? So number of like is still 2. Okay. So next. सो जब भी आप यहाँ से फाइंड करेंगे, पहला आपको ये कंप्लीट दिखेगा। सो 1 2 3, ए एलिमिनेट हो जाएगा, बी पॉसिबल है, सी एलिमिनेट हो जाएगा, डी पॉसिबल है। नेक्स्ट, इसके बाद आप देखोगे टॉप आपको ऐसा दिखेगा, तो बी एलिमिनेट हो जाएगा। सो राइट आंसर इज डी। क्या होगा बेटा? डी इज द राइट आंसर। यस। 3D problem figure shows the view of an object. Identify the correct elevation as indicated by the arrow. Now ये problem figure है और आपको find out करना है answer figure. So which one is right answer? Do it fast. Raj, which one is right answer? So direction of arrow जब भी आप find out करेंगे तो आपको ये वाला figure आपको show होगा। Okay. So next, कौन सा फिगर है? 1 2 3 ऑल 4 में। फिर इसके बाद आपको ये फिगर शो होगा। यस, डन। तो ये ऊपर तक है, नो, रॉन्ग। मे बी इसमें वो फिगर है क्या? रॉन्ग। यहाँ पे वो फिगर है क्या? रॉन्ग। सो राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। ओके, सो आज कितना है? 11 है। ओके, सो आज आप देख लो। वैसे 24 आवर्स पहले आपको दिख जाएगा, और इन केस आपको नहीं दिखता तो नाटा की जब भी आप ऑफिशियल साइट पर जाओगे तो वहां आपको टोल फ्री नंबर मिलेगा, या फिर उनका ऑफिशियल मेल आईडी है,
और आपका जो भी प्रॉब्लम है और स्क्रीनशॉट के साथ आप उनको मेल करोगे, सो विद इन 24 आवर्स आपको उसका आंसर मिलेगा। ओके, सो नाटा के ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, सो मॉर्निंग टू इवनिंग आपको वहाँ पे उनका टोल फ्री नंबर है, उस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा उनका ऑफिशियल मेल आईडी है, आप उस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब इन द आंसर फिगर can be made based on the unfolded cube in the question's figure? So which one is the right answer? Okay, my words. Okay, so it may be possible, है ना, ये possible solutions है कि आप वहाँ पे try करेंगे। Okay, connect toll free number. So now 4H. So opposite of 4 is H. So can be, okay, can be made. Okay. So find out opposite face never be a adjacent. So D is not possible solutions. 2 and S, 2 and S, not possible solutions. And okay, so next 2 4Z, yeah, possible 4H. So we know that 4 and H both are opposite, so only A is the right answer. Okay, so which one is right answer? A is the correct answer. Logic rules, the rule is opposite faces never be a adjacent, and adjacent faces never be a opposite. Okay, done it. Yes. Okay. Now move to the next one. The population of a city grew from 20 lakhs to 22 lakh. Find the percentage change based on the final value of population. Okay. So in a given problem, there is a city. Okay. So there was a city. The population of city is 20 lakh. Okay. So initial population of city is 20 lakh. Okay. Now final population of city is how many? How much is 22 lakh? 22 lakh. Okay. So now change is final minus initial. So growth or percentage change is 2 lakh. Okay. So 2 lakh. So percentage change into 2 upon initial. So what is the initial value? 2 lakh upon 20 lakh into 100, 10. So 100 upon 10. So that is 10%. Okay. So population increased by 10%. Yes, beta. Result declaring by day. Okay. Next. The price of item is increased by 20% and the decreased by 20%. The final price of compared to the original prices. Okay. So price of a goods is 100%. Okay. Price of item is 100%. Suppose that price of item is 100%. So initial price of goods is increased by 20%. So we know that 20%. So what is 20%? So 20% of 100 is 20%. Okay, 20. So 20% is plus 20. So now price is 120%. 120.
and then decreased by 20%. Okay, so further decrease by 20%. So we know that 20% of 120 is 24. Okay, now 24. So decrease by 24. So now we subtract 24 minus 24 out of 120. So now final answer is 96%. Okay, so 96%. Okay. So the final price as compared to the original price. Okay, now this is the final price after increment or decrement. Final price of an item after increment or decrement is 96%, and original price of an item is 100%. So now we compare final price and original price. So there are 4% decrement. Okay, so now answer is D, 4% decrease. ना रिजल्ट जो भी है वो आफ्टर 10 to 7 to 10 days में आपको पोर्टल पर ही शो हो जाता है. ओके, गॉट इट? कैन आई रिपीट वन मोर टाइम? So I hope everyone understood. Okay. So number of like is still 2. तो चीजें क्लियर हैं. सो है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कंटिन्यू होना चाहिए. द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 article. The profit percent is. Okay. So first read the problem, then solve the problem. In a given problem, the cost price of 15 article, the cost price of 15 article as the selling price of 10 article. Okay. Cost price of 15 article is equal to the selling price of 10 article. Now we know that cost price of 15 article. Cost price of 15 article equal to the selling price of 10 articles. Selling price of 10 article. Okay, now CP of means is multiplication, then 15 equal to SP of means multiplication and 10. CP upon SP equal to 10 upon 15. So now 2 is to 3. Okay. So the profit percentage, we know that profit equal to SP minus CP. So now change into in SP and CP is 3 minus 2 is 1, and percentage profit, we know that percentage profit is profit upon CP multiplied by 100. So now value of P is 1 and value of CP is 2 and multiplied by 100. So now percentage profit is 50%. Okay. तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है. ओके, सो नाउ इजी. सो है ना, जो गिवन कंडीशंस. Now this one is given that. So what is given that? CP of 15 article equal to the SP of 10 article. So now equal, the ratio of SP and CP and SP is to 2 is to 3. So we know that profit equal to selling price minus cost price. So now profit equal to 1 and CP equal to 2. So profit percentage, profit upon CP multiplied by 100. So profit equal to 1 and CP equal to 2 multiplied by 100. Now profit percentage is 50%. Okay. Move to the next problem. Successive discount of a 10% and 15% are equivalent to the single discount. Okay. So discount हमेशा किस पर होगा? MRP पर. Okay. So याद रखिएगा, ये आपके नॉलेज के लिए. अदर देन द प्रॉब्लम्स, इस प्रॉब्लम के अगर मैं बात करूंगा कि क्या होगा डिस्काउंट, MRP at the rate discount always equal to selling price. Okay,
So now, successive discount of 10% and 15% are equivalent to a single discount. We know that. So successive discount equal to x percent plus y percent minus x by upon 100. Okay. So x equal to given a 10%. So 10% plus 15% minus 10 into 15 upon 100. Okay. 25 minus 1.5. Okay. So now 23.5. 23.5%. Now, okay. Normal क्या होगा? So we know that 100%. Now discount of 10%, that is 90, and after discount is 15%. तो कितना हो जाएगा? 19 into 50 upon 100. Okay. So 113.5, 13.5. Okay. So 13.5 फाइनली. सो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा फाइनली ये? इसको ओवरऑल आप देखोगे 23.5, 76.5. Got it? Next, move to the next one. A sum of 4,000 is lent for 5 years at the rate of 15% per annum. Find the interest. So find the interest. Okay. So given that principal is 4,000, time is 5 years, rate is 15%. So we know that simple interest equal to multiplication of changes into rate and time. So simple interest क्या हो जाएगा आपका PRT upon 100. So now value of P is 4,000, given that rate 15% and T is 5 upon 100. Okay, so now changes 1 to 45 is 200 into 15 and 30, 3,000. Okay, so now interest is 3,000. Got it? Now move to the next one. The compound interest on a certain sum of 2 years is 105 and the simple interest is 105. Find the rate of interest per annum and the sum. अच्छा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर है ना. ओके, सो डू इट फास्ट. विच वन इज राइट आंसर? डू इट फास्ट बेटा. चेरी, शैयद, यूजर, डू इट फास्ट बेटा. विच वन इज राइट आंसर? ओके, so which one is right answer? The compound interest on a certain sum, okay, for 2 years is 105 and the simple interest is, find the certain sum is, okay, now. So we know that basic definition of compound interest and simple interest. Compound interest क्या होगा? Interest of interest. We know that compound interest क्या है? Interest on a interest. That is compound interest. Okay. So value कितना था? Suppose a principal is 100%. Yes or no? So next, simple interest equal each and every year. Simple interest equal each and every year. Okay, याद रखिएगा. Okay, so next. So 2 year का simple interest कितना है? क्या क्या given that है? Given that simple interest on
2 ईयर कितना है 100 रुपीज। सो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर कितना होगा इक्वल टू 50 रुपीज। ओके, सो वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा इक्वल होगा ईच एंड एवरी ईयर। एंड नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स कितना गिवन है 105। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट इन ना इन अ फर्स्ट ईयर simple interest and compound interest both are equal। फर्स्ट ईयर में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोथ आर इक्वल, तो समझना है यहाँ पे मैंने मान लिया कि P इक्वल टू 100% है। सो मैंने लिया यहाँ से 100%। फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना है 50। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा बेटा 50। सेकेंड ईयर में भी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 50। ओके, नेक्स्ट सो वी नो दैट कि इन अ फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होगा। सो फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट भी 50 होगा बट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 55 यानी +5। अब कंपाउंड इंटरेस्ट होगा क्या इंटरेस्ट ऑन अ इंटरेस्ट। सो इस 50 पर कितना लगा है 5%। सो आप निकाल लो 50 का 5 कितना होगा, यानी यहां से निकाल सकता हूँ रेट आ जाएगा R इक्वल टू क्या होगा 5/50 × 100। तो कितना हो जाएगा 2, यानी R इक्वल टू हो जाएगा 10%। R 10% है तो यहाँ से भी 10% निकालो, तो प्रिंसिपल इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या प्रिंसिपल का 10% इक्वल टू 50। ओके, तो यहाँ से प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई 10/100 इक्वल टू 50। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 500, यानी प्रिंसिपल आपका कितना है 500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। 27 जून। ओके मोहित ना, तो फर्स्ट क्लास ऑफ पार्ट बी बेटा, पार्ट बी के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट करूंगा क्या क्या। पार्ट बी के लिए फर्स्ट आप कवर करेंगे वी आर एंड क्वांट एंड आर्किटेक्चरल स्पेशल एप्टीट्यूड। ओके, सो आप चैनल को एक्सप्लोर करेंगे, वहां पे आपको प्लेलिस्ट दिखेगा जेई बी आर स्पेशल एप्टीट्यूड या जेई बी आर स्पेशल क्लासेस। मैथमेटिक्स का छोड़ के आप बी आर का स्पेशल एप्टीट्यूड एंड एएटी जो क्लासेस हैं उनको कवर करिएगा। ओके, सो जीके का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है बट जीके में आप आर्किटेक्चरल रिलेटेड जीके ही करिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये आपको हेल्प करेगा, अदरवाइज आपको पता है वीआर और एनवीआर का इंपॉर्टेंट रोल है। इसको रिपीट करना है क्या वन मोर टाइम, कैन आई रिपीट वन मोर टाइम? ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। Find the third proportional to the numbers 3 and 6. Okay, so find the third proportional of 3 and 6. Okay, Mohit and Archie. 14th of June. Okay, हाँ, so part B को prepare करिएगा. Okay, next. So for find the third proportional to the number 3 and 6. Okay, so we know that there are proportional first, second, and third. Okay, suppose A, B, C are a proportional. Okay, suppose ऐसा given है A, B, C in a proportion. Okay, so now A is called first, B second or mean, and C is called third proportion. Okay, so now then A is to B, B is to C. Okay, A upon B equal to B upon C. So B square equal to AC. So where V is a mean proportion. So find the third proportion. Okay, so 3, 6 and X. So X क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर
X is a third proportion. Third proportion. Okay. So now 3 is to 6 equal to 6 upon x. Okay. So 3x equal to 36. X equal to 36 by 3, 12. Okay. So value of third proportion is 12. Okay. I hope everyone got it. The value of third proportion is 12. Can I repeat one more time? Find the third proportional to the numbers 3 and 6. So आपको पता है कि if ABC in a proportion, so A is the first proportion, B is the second proportion, and C is the third proportion. Okay. So in our problem, so we find the third proportion. So there are two numbers are given 3 and 6. So 3 is the first proportion and uh, 6 is the second proportion. Okay. Now move to the next one. 1 upon x is to 1 upon y is to 1 upon z is equal to 2 is to 3 is to 5. Then find the value of x, y, and z. Okay. Then find the value of x, y, and z. Do it fast. Which one is right answer? Now given that 1 upon x, 1 upon y, 1 upon z equal to 2 is to 3 is to 5. Okay. Then solve it. Solve the problem. Do it fast. Do it fast. Do it fast. 21 got the answer? Okay, now. So basic 10th standard concept. Okay. So when okay, when 1 upon x, 1 upon y, and 1 upon z is in a ratio is 2 is to 3, 3 is to 5. Now whole the scenario is equal to k is to 1. Okay. So we know that 1 upon x equal to 2k. Yes or no? So which one is right answer? Okay, got it? 1 upon x equal to 1 upon x equal to, okay, got it? So now 1 upon x, 1 upon y, and 1 upon z equal to 2 is to 3 is to 5. Now whole scenario is divided is k is to 1. Okay. So now xk equal to 2. Okay. So x equal to ky2. Similarly, y equal to ky3 and z equal to ky5. So now x is 2, y is 2, z equal to ky2, ky3, and ky5. So now LCM of
2, 3, and 5 is LCM of 2, 3, 5 is, okay. So what is the LCM? 30 now. So multiplied by 30. 30 k by 2, k by 3, and k by 5. So now 15k, 10k, and 6k. Okay. X by z equal to x by z equal to 15 is to 10 is to and 6. ये हो जाएगा आपका आंसर. ओके. और सबसे इजी शॉर्टकट क्या है? ये रेसिप्रोकल है. क्या है ये? रेसिप्रोकल. सो जब भी रेसिप्रोकल है तो आपको सिर्फ सिंपल सा इतना लिखना है. शॉर्ट ट्रिक क्या होगा? शॉर्ट ट्रिक ये होगा, आपको क्या करना है, जस्ट एक्स बाई और जेड को क्या लिख देना है, इसको रेसिप्रोकल कर देना है. 1/2, 1/3 एंड 1/5. एलसीएम लेके सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा आपका 15:10:6. सिंगल लाइन में हो जाएगा. ओके. मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया है. ओके. सो नाउ दिस वन इज द प्योर कॉन्सेप्ट और ये आपका शॉर्ट ट्रिक. शॉर्ट ट्रिक में जस्ट रेसिप्रोकल बनाना है और सॉल्व कर देना है. ओके. इतना लंबा नहीं जाना जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया. मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताया कि कभी भी एग्जाम में आपको लगे तो k:1 होगा, देन k:1 के बाद आप सीधा रेसिप्रोकल से भी कर सकते हो. ओके. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. Find the average of first 13 odd number. Find the average of first 13 odd number. First, we find sum of first n odd number. Okay. So now, how it, nah, we know that 1 plus 3 is 4, 1, 3, 5 is 9, 1, 3, 5, and 7, 16. Okay. So how many numbers are there? There are two odd number, three odd number, and there are four odd number. Okay. Now 2 का square, 3 का square, and 4 का square. Similarly, there are n odd number. N odd number. So sum of n odd number, sum of n odd number equal to n square. Sum of n odd number equal to n square. So similarly, we know that average equal to sum of observation upon number of observations. So sum equal to n square and n. So now average equal to n. Okay. So average of first n number equal to n. So how many first odd number? 13. So right answer is 13. Okay. So बिना सॉल्व किए भी हो गया. ये आपको कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया. ओके. अदरवाइज तो मैं सीधा 13 टिक करना था, मुझे एक्सप्लेन ही नहीं करना था. बट मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया बिकॉज ये आपको पता होना चाहिए कि हाउ इट इज पॉसिबल 13. ओके. नाउ मूव टू द नेक्स्ट नंबर. Got it? Next. The LCM of two number is 864 and the HCF is 144. So if one number is 288, then another number is, do it fast. Do it fast. Okay. So LCM of two number. So we know that first HCF and LCM equal to number A multiplied by number B. अब ये
है ना, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं बट डायरेक्ट सॉल्व करेंगे. सो नाउ HCF of LCM of two number is 864. LCM given is 864. HCF is given is 144 and number A given is 288. Then the other number B find. Okay, now 864 multiplied by 144 equal to 288 and number B or another number. So we know that, okay, 8 threes are 24, okay, and carry 4 and carry 2. Next, 8 threes are 24 and 2 26, 6 carry 2, okay, 3 twos are 6 and 2. So now 3 times. So 3 fours are 12, carry 1, 3 fours are 12 and 13, 3 carry 1, 3 and 4, 432. So number B is 432. Okay. So number B is 432. So number B क्या होगा? 432. Good बेटा है ना? Next. Solve it. Do it fast. 784 divided by 14. Explain करूं मैं इसको. पहले क्या डिवाइड होगा बेटा? Divisible. Bod mass according to bod mass. 784 divided by 14 plus 598 divided by 13 plus x equal to 99 upon 100 multiplied by 2500. So 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट 14 5 जा 70. कितना रिमेनिंग होगा? 78 माइनस 78 और 14 6 जा 54 प्लस 13 4 जा 52 7 13 6 जा 78 plus x equal to 25 9 जा 225 carry 5 put 5 to 20 25 9 जा 225. ओके, सो कितना हो जाएगा ये 742475. सो यहाँ से इसको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 6 और 6 2 5 और 4 9 और 1 102 प्लस x इक्वल टू 2475. नाउ x इक्वल टू 2475 minus 102, so 3732. So now right answer is 2373. Yes or no? So right answer is 2373. Right answer is 2373. Move to the next one. Do it fast, beta. Raz, Priyanka, imposter, आर्ची, मोहित. क्या होगा बेटा राइट आंसर इसका? प्रॉब्लम को देख के समझ में आ रहा है क्या? जब भी आपको पता है बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगी. ओके, सो नाउ 1 2 3 4 एंड 5. 6 की पावर 5 प्लस 1 2 3 4 6 की पावर 4 इक्वल टू 81. क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4 इंटू 3.5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स. यहां से मैंने 6 की पावर 4 कॉमन ले लिया तो इधर आएगा 6 प्लस 1 इक्वल टू 3 की पावर 4 इंटू 3.5 इंटू एक्स. तो ये हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 7 इक्वल टू 3 की पावर 4 इंटू 3 की, ये 2 टाइम्स आएगा. ओके, तो ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4
इंटू टू इक्वल टू 3 की पावर 4 इंटू एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 5 इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 32। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 32। ये इजीएस्ट वे है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ओके, नाउ मूव टू द अनदर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या है इजीएस्ट वे, बिकॉज मुझे कहाँ से पता चला? ये 80 से पता चल रहा है। ओके, और यहाँ जो आंसर गिवन है उससे क्या, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, ये तो सेम ही आंसर दे दिया ना। ओके, समझ में आया? क्लियर? ये हिंट मिला मुझे। नेक्स्ट, pointing to a photograph of a boy, Suresh said he is the son of the only son of my mother. How is Suresh related to that boy? Okay, how Suresh is related to that boy? पहले तो रीड करेंगे। Pointing to a photograph a boy. Okay, so now this is the photograph. ये फोटोग्राफ है किसका? बॉय का। ये हो गया बॉय। ही सेड, किसने कहा? सुरेश। ओके भाई, ये है सुरेश। सुरेश ने बोला है, सुरेश सेड ही इज द सन ऑफ, किसका सन है? ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर। पहले तो सुरेश की मदर, और ओनली सन का मतलब क्या है? यहाँ पे सुरेश खुद आ जाएगा, है ना, बिकॉज ओनली सन मीन्स सुरेश हिमसेल्फ हो जाएगा, सुरेश हिमसेल्फ, बस। और उसका क्या है? ये सन है। तो हाउ इज द सुरेश इज रिलेटेड टू द बॉय? तो सुरेश का क्या रिलेशन होगा इस लड़के से? फादर। सुरेश कौन होगा इस बेटे का? इसका फादर, नॉट अंकल। ओके, ओनली सन। सन नहीं बोला उसने, सन ऑफ माई मदर बोलते तो अंकल पॉसिबल था, बट ओनली सन ऑफ माई मदर। आई एम द ओनली सन ऑफ माई मदर, इट मीन्स एक ही बेटा है। ओके, ओनली सन मीन्स एक ही। ओनली डॉटर मीन्स सिंगल डॉटर है, मे बी टू सन हो सकते हैं। सिंगल चाइल्ड बोला जाए तो फिर एक ही होगा। ओके, डन? रिपीट करना है?